Welcome to this video, and we are coming with this new video that is Kamchatka earthquake. And recently in the news, magazine, social media, आपने देखा होगा कि कामचटका earthquake and related tsunami. So although वहाँ पे इतना ज़्यादा loss तो नहीं हुआ lives and property को, but yes, this was in the news. So what do you mean by this Kamchatka earthquake? We have a slide with you that actually I'm taking cutting from the newspaper. This is Indian Express News, Kamchatka quake, and one more slide that is this is the ring of fire and the actual region where earthquake took place. So before going to understand this concept earthquake, we need to have fair idea. We can say clear some basic concept regarding earthquake. As you know, earthquake is nothing but the stress release from within the earth because of the stressing in the rocks. तो जो भी स्ट्रेसेस है आपको पता है वैसे भी जो अंदर का जो पार्ट है, देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस टू कैन असर्टेन द व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड द अर्थ, बट वन थिंग इज श्योर दैट द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस कोर मेंटल बाउंड्री टुवर्ड द upper layer, especially upper silicate layer, and with this transition they create some forces within the inside the earth, and that forces led to the development or accumulation of the stresses inside the rocks. And this stresses, when the rock gets snapped against the fault plane that may or may not be existed earlier, this faulting releases that stressed energy, or can get stressed pulses of energy, and that take the form of waves, and that moving in the all the direction. Especially जैसे कि मैं कहूँगा कि तो H.F. Reed है, H.F. Reed साहब in 1906 they came out with his own theory, elastic rebound hypothesis or stick slip phenomenon. Let's suppose this is the surface and the stresses accumulated at this point, और यहाँ पे जो rock है उसमें stresses accumulate हुए, और because of the more stresses, that means rupture strength उस rock की अगर exceed हो गई तो obviously the rock actually snap against this fault, and this fault created waves, and that waves travel in all the form. The stresses accumulated take the form of wave called seismic waves. So this is called earthquake. So, and that led toward the shaking of the ground on the earth, and that led to the various impacts, especially loss of life, property, infrastructure, all these things. So this is the basic understanding regarding this earthquake. And yes, the you can say point or the place where this initial moment or the stress release takes place, this is called hypocenter, or we can say focus. And when these waves reaches first to the surface, especially the distance, minimum distance traveled by the wave, and possibly above this focus, here is one point called epicenter. That means vertical trace of the focus on the earth surface is called epicenter, or you can say the minimum or within short span of or minimum time at which this wave reaches to the surface, this point is called epicenter. So these basic terms associated with earthquake. Now coming to this article, especially earthquake Kamchatka quake. As you know, Kamchatka Peninsula is a part of the Russian territory located in the far east. Especially here in the map you can see the heading, you can say the magnitude 8.8. Here again this word magnitude coming into picture. Magnitude means the amount of shaking of ground as quake passes through the, you can say, surface, earth surface, or magnitude can be defined different way, that in terms of energy released. So amount of energy released. So magnitude, one of the important scale is what? Richter scale. H.F. Richter giving the scale, this magnitude measure the amount of shaking of the ground, and it uses what? Logarithmic scale. There is no upper limit to this scale, although lower limit can be 1, 2, 3 as well. So 8.8, especially the earthquake more than 7 Richter scale are considered to be the dangerous for the lives and you can say property. Now yes, magnitude 8.8, the earthquake in Russia's far eastern corner is one of the strongest on record. Its epicenter, yes, epicenter means vertical trace of the focus on the earth surface, is on the circum-Pacific seismic belt, CPB, more popularly known as the ring of fire, which is the most seismically active belt on the planet, accounting for 80% of Earth's largest earthquake. So this point talks about the center where this earthquake took place, and at the same time you came across
heard these two terms, that is CPB, Circum-Pacific Seismic Belt and Ring of Fire. See, these two regions are the same one, but in this न्यूज उन्होंने उसको ही पॉपुलरली बोला है. बट इसका अप्रोप्रिएटनेस की मैं बात करूं तो सीपीबी जो है टर्म, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर द अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस रिंग ऑफ फायर is more appropriate for the volcanic distribution or volcano distribution. Although दोनों रीजन सेम ही है, क्योंकि वहां पे वो जो रीजन है सर्कम पैसिफिक बेल्ट, वो मतलब पूरा लगभग ऑलमोस्ट पैसिफिक के अराउंड ही है वो बेल्ट पूरा. और आप देखेंगे सबसे लार्जेस्ट जो अर्थक्वेक है, बिगेस्ट अर्थक्वेक, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट डीप अर्थक्वेक हो, शैलो, इंटरमीडिएट, या फिर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड देखे तो 8 और मोर देन 8 वाले, तो उसी रीजन में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए जाते हैं. और वैसे रिंग ऑफ फायर क्यों? क्योंकि उसी रीजन में आप देखेंगे बहुत सारे वल्केनो भी लोकेटेड हैं, एंड दिस रीजन इज मोर, और कैन से फुल्ली सबडक्शन जोन है. जहां जहां पे सबडक्शन जोन होगा वहां पे यूजुअली आपको अर्थक्वेक के वल्केनो मिलते हैं. आपने अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको वो चीज पता होगी. Although this is a short video, तो इसमें मैं सारी चीजें तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा regarding the plate tectonics, how plates moving, what are the different types of plates and how they interacted, which type of plate boundary interaction, and even in earthquake itself आप देखेंगे pattern of energy release, H.F. Reed theory, elastic rebound, types of earthquake, तो even effects of earthquake, measurement of an earthquake, even distribution. तो ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वी हैव लिमिटेड टाइम विद अस. सो ये जो आर्टिकल किस पे बात कर रहा है, इसके लिए मैं बस एक ब्रीफली बता दूंगा कि व्हाट इज राइटिंग और व्हाट दिस आर्टिकल ट्राइंग टू से, इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे. तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो बेल्ट है सर्कम पैसिफिक बेल्ट, स्पेशली पूरा इनसर्कल कर देता है लगभग पैसिफिक को, उसी को रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं. एंड वो 80% अर्थ बिगेस्ट अर्थक्वेक, क्योंकि जो 8 और 8 से ज्यादा रिश्टर स्केल वाला अर्थक्वेक में वो उसी पे रजिस्टर होते हैं. सो हियर एक्चुअली इन दिस स्लाइड गिवन द 20 years data, that is strongest earthquake in the last 20 years. That means आप देखेंगे मोर देन 8 वाले, 8 मैग्नीट्यूड वाले सारे अर्थक्वेक यहाँ पे दिए गए हैं. और ये जो अर्थक्वेक है स्पेशली कामचटका वाला, कामचटका ये पेनिनसुला रशिया का फार ईस्ट रीजन, तो ये 8.8 वाला है, मतलब सेकंड देन दिस 9.1 दिस तोहोकू रीजन. वही ये जो अर्थक्वेक, उसका ही नतीजा क्या हुआ था, सुनामी आया था. सुनामी आके फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर डिजास्टर, आपको वो पता होगा. और यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट सुनामी, tsunami also is a Japanese word. Su means harbor, nami means waves, is literal meaning, and tsunamis are the unusual waves primarily because of the earthquake. Although other possible reason could be there, that is they are just like the falling of meteorite, the landslide, you can say undersea landslide or topple down of mountain. Other reason could be there, but primarily this phenomenon occur because of the earthquake. Because when earthquake takes place within the, you can say under the sea, then obviously this fluctuate, or you can say they changes the upper movement, or you can say they suddenly create the jerk in the upper water. So this energy transferred in the form of wave, and this wave travel long distance without wasting much of energy. And this obviously these waves have a lot of huge amount of energy, and when they reaches to the coastal area, they shed this all the energy in the form of wave height and other destruction. So this is about the tsunami. So obviously जब ये अर्थक्वेक इतना बड़ा आया था तो सुनामी भी आया, तो नियर बाई एरिया जब देखेंगे हवाई हो या फिर जापानीज कोस्ट हो, इवन अमेरिकन कोस्ट हो, वो भी अफेक्टेड हुए थे. कई बार 3 to 4 मीटर हाइट वाला वेव आया था, कई बार लेस देन आया था, उससे ज्यादा भी आ सकता है. समटाइम्स ऐसा होता है कि जब कई बार डेडली जो अर्थक्वेक आते हैं उसकी वजह से जो सुनामी फॉर्म होते हैं, कई बार 20-30 मीटर का भी वो क्रेस्ट बना देते हैं या फिर हाइट बना देते हैं सुनामी का. सो दीज आर द, यू कैन से, लिस्ट ऑफ द अर्थक्वेक दैट हैड occurred or took place in this region since last 20 years. Now, yes, this first paragraph talk about the introduction, कौन सा region है, कहाँ पे हुआ, सुनामी वगैरह आया, वो सब दिया हुआ है. Yes, here we given the title rare but not unusual. Rare why? Because the earthquake more than 8 Richter scale hardly occur in any region. But आप देखेंगे last 20 years का डेटा देखेंगे,
तो यहाँ पे खाली बोल रहा है कि 5 ही ऐसे अर्थक्वेक है जो कि 8.5 से ज्यादा या 8 और 8.5 से ज्यादा आए हैं। तो ये रेयर है बट नॉट अनयूजुअल। दैट मीन्स दिस रीजन स्पेशली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और यू कैन से सर्कम पैसिफिक बेल्ट इज फुल ऑफ सबडक्शन जोन। और जहां जहां पे सबडक्शन होगा, सबडक्शन इन द सेंस ये जियोलॉजिकल प्रोसेस है, आगे एक्सप्लेन भी किया प्रोसेस ऑफ सबडक्शन। उसका मतलब है वन प्लेट दो आर हेवियर वन डेंसर वन एक्चुअली यू कैन से सबडक्टेड और slide down under the other plate, and this sliding down you can subduction create what jerk and all this you can say compression, crumbling and all these things. So that lead to the earthquake and volcanic formation as well. तो ये full of subduction zone है। इसमें मेनली आप देखेंगे नॉर्थ पैसिफिक प्लेट हो, यूरेशियन प्लेट हो, वो सबडक्शन हो रहा है। और बहुत सारे अदर भी माइनर प्लेट्स हैं, उसमें क्या होते हैं कि सबडक्ट होते हैं। और यूजुअली आप देखेंगे ये सबसे लार्जेस्ट सबडक्शन जोन है वर्ल्ड का। I have the one diagram or can say map or image with their subduction zone as well. I will show you. Wait for a moment for this. So this is a rare but not unusual, क्योंकि जहां जहां पे सबडक्शन होगा तो वहां पे यूजुअली आपको क्या मिलेगा, अर्थक्वेक मिलेगा ही। तो प्रोसेस ऑफ सबडक्शन जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है क्या होता है। तो यहाँ पे देखें सिस्मिक बेल्ट, geological process in which one tectonic plate, put simply a large section of the earth crust presses against another, usually the heavier or denser plate, that is one with more mass per unit area, tend to go below the lighter plate. But this process results in deformities and creates a huge stress in the plate boundaries. It is this stress that releases in the form of earthquake or the seismic waves. Then again, other active region. So this paragraphs or this subtitle talks more about distribution of the earthquake. So apart from this circum-Pacific belt, which records around 80% or more than 80% of world's you can say highest or largest earthquake, apart from this, what are the other regions where you will find or you will observe such type of earthquake, although mild intensity and magnitude? So other region here you can given, yes, Alpine belt. Alpine belt means this region started from Mediterranean Sea. Here Mediterranean Sea near the Atlantic Ocean, Mediterranean Sea between this Europe and अफ्रीका, वहां से स्टार्ट हो जाता है। तो पूरा ईरान, अफगानिस्तान, हिमालय, साउथ ईस्ट एशिया लेके फिर से एक बार आप देखेंगे यहाँ से पूरा आके यहाँ पे जाके मिल जाता है। तो ही मीट द सर्कमपैसिफिक बेल्ट इन द resistance second, especially near Indonesia. This region also record around 15 to 17% of the world's earthquake. Especially वो जो earthquake होते हैं वो थोड़े इंटरमीडिएट और शैलो टाइप के होते हैं। बट आगे जाके उन्होंने थर्ड रीजन दिया है। थर्ड इंपॉर्टेंट सिस्मिक बेल्ट इज नोन एज मिड अटलांटिक ओशन। स्पेशली अटलांटिक ओशन में आप देखेंगे यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है और डिफरेंट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन हो जाता है। मतलब जो रीजेस है वो दिस स्लाइस्ड ऑफ व्हाइल द इंटरेक्टिंग ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन, तो वहां पे भी आपको यूजुअली शैलो टाइप के अर्थक्वेक मिलेंगे। तो ये 3 मेन रीजन दिए गए हैं। बट ये जो पैराग्राफ है आगे वाला, ये थोड़ा इसके बारे में बोलता है कि मान लीजिए अल्दो ये जो रीजन है सर्कम पैसिफिक बेल्ट, उनमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत, मैं कहूंगा कि रेयर है या फिर मैं कहूंगा कि बहुत कम है। तो इसलिए जब अर्थक्वेक हो जाता है तो उतना उसका पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन वही सेम अर्थक्वेक अगर ये मिड अल्पाइड बेल्ट पे हो जाता है, क्योंकि वो पॉपुलस रीजन है, तो वहां पे अगर हो जाता है तो उसका जो रेमिफिकेशन, उसका जो इम्पैक्ट है आपको दिख जाएगा लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज में। स्पेशली इन्होंने कंपैरिजन किया है कि नेपाल में जो 7.6 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक हुआ तो उससे लगभग 15,000 लोग मर गए थे या फिर दे लॉस द लॉस ऑफ लाइफ ऑफ अराउंड 15,000 पीपल इन नेपाल। सो दिस इज अबाउट द यू कैन से दिस आर्टिकल, बट फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन you need to know all about earthquake, because earthquake, this topic is categorically mentioned in your GS1 syllabus, and which is very important from preliminary as well as mains point of view. And we have one more diagram, or you can say map or image with us. You can see this is the CPB or Pacific Ring of Fire. Here you will find different types of plate boundary interaction. So that is why this article cover the main point like plate tectonic theory, second earthquake, tsunami,
Yes, you need to cover these 3 topics to understand this article in better way or more comprehensive way. So what is the take, or you can say what can be taken from this news? आपको ये बेसिक जो टॉपिक है, कोर टॉपिक है, ज्योग्राफी के अच्छे से कवर करने होंगे, बेसिक टर्म है वो अच्छे से एक्सप्लेन मतलब रीड करने होंगे, तभी जाके ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आएगा। अल्दो मैंने ट्राई किया है कि विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपको आर्टिकल सारा समझ में आए, बट आपको और डिटेल में समझना होगा तो आपको ये बेसिक टर्म, ये जो टॉपिक मैंने मेंशन किए, प्लेट टेक्टोनिक हो, इवन अर्थक्वेक उसका बेसिक से लेके या फिर सुनामी, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टू दिस स्मॉल वीडियो। आगे भी हम ऐसे ही कुछ वीडियो लेके आएंगे सो दैट कैन आपका प्रिपरेशन थोड़ा अच्छे से हो जाए और आपको समझ में आए कि उस आर्टिकल से हमें कौन सी चीज़ें एक्वायर करनी है या अडॉप्ट करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।